too. It was an extraordinary sequence of events yesterday. One that will be almost impossible to match. But the first thing that strikes you, yes, there are a few clouds looming, but it's nice and bright. The colours of cricket there to see. Fair sprinkling of blue in the sky, lovely green outfield, and conditions absolutely wonderful to play Test match cricket. It's the IDFC First Bank Test Series, formerly Day 3, India versus New Zealand at the Chinnaswamy Stadium, where New Zealand had an astonishing first day with the conditions in their favour, and they played magnificently to drive home that advantage. There were a few people yesterday, quite a few people yesterday, and they were shell-shocked by what they saw. They've come early hoping for a change in fortunes maybe. But New Zealand with 134 ahead are pretty much in control of this Test match. There you go, a mere 46. There was one double-digit partnership in that innings. Pant 20, Jaiswal 13. When you start to get 4s and 2s on a summary, you know you're already in trouble. Matt Henry was excellent. 5 for 15. Will O'Rourke in his first series in India, 4 for 20. And of course Jasprit Bumrah, who will come back this morning so determined. It's intriguing, the match situation. Ball. Runs straight away and confident, good-looking runs for Rachin Ravindra onto the pad, and he hits it well in front of square. My goodness, Smith. One ball, you'd imagine, over 450 overs in a Test match wouldn't really count. There was probably drifting down legs. It's just snaking along the surface from wicket to wicket, those crack. And all the more reason it becomes extremely important for India to pick up. First over of the day, 185 for 3 New Zealand. With the Bengaluru traffic, you know when you're leaving, you never know when you reach. You don't have such problems in New Zealand, do you? Especially in Auckland. There are more sheep than people. Happy with the two seam bowlers starting? Would you want to be a spinner? I'm surprised when we talked about... One thing New Zealand did very well yesterday, you saw that graphic on your screen a little while ago. Coming back to that topic, I remember Sachin Tendulkar when having a discussion. He's look good. He's trusting the bounce when you're playing in front of your pads through the onside. You're trusting the bounce. I do think India should have gone in with one. Now the back foot didn't quite come off the middle of the bat, and so will be pulled back in. They'll get 3. And you see DK, there is experience as a cop. Please note, he said son. Like an antique, you're saying? No, like class. The onside again, maybe just a single. The thing will be of interest to me is... It's interesting that you bring up Rohit Sharma's name. I must admit, yesterday's press conference was one of those days. Just a hint of away movement here for Siraj. He does bowl a good outswinger. So there you say, right, let me see some good batting. 189 for 3. He's looking decisive with his footwork today. You can see how comfortable. Just if you're not a swing bowler, don't think you'd come up through the ranks in first-class cricket. There's the first one that causes trouble for the batter. Goodness me. One of the things, that New Zealand was sensational in the field. Some of the catching was absolutely top draw. That's the outside edge there. So, and I'll be perfectly honest with you, one of the downsides of the New Zealand... Nice battle developing. It's a question of how long the skipper in the foreground
wants it to continue. There's the And the boundary goes exactly in the opposite direction. Fine through the cordon to... Oh, this time it's taken. Siraj gets a wicket. He's made it a very good habit as Yashasvi Jaiswal in that gully area. Might have hurt himself a little bit, but he hung on to the ball and India have got the wicket. It's the other quality to his cricket, DK, as well. While it's been mighty impressive as a young... almost played on. And a good call from the non-striker for a single. Now, 400s in his 35th test, with keeper batting sort of lower middle. That's very handy. Oh, just drifting into the pads. And Blundell will seize the... कुल बढ़त 152 रनों की न्यूजीलैंड के पक्ष में। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं मनोज दत्त और मेरे साथ हैं शबाब अनवर। अच्छी बल्लेबाजी और एक लंबी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी निश्चित रूप से। भारतीय कप्तान से बैटर्स की अग्नि परीक्षा ली थी, निश्चित रूप से कंडीशंस का बहुत अच्छा उपयोग किया था, सीधे बैट से ड्राइव किया। विकेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है भारतीय दृष्टिकोण से, कि जिस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं काफी खतरनाक किसी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल यहां पर रन्स बनाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो नहीं रही है न्यूजीलैंड के बैटर्स का। आउटफील्ड भी काफी तेज हो गया, बारिश के कारण आउटफील्ड जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था तो दिन का खेल नहीं हो सका था। दूसरे दिन भारत अपनी धरती पर सबसे न्यूनतम स्कोर पर टेस्ट क्रिकेट न्यूजीलैंड के पास हो चुकी है। 6 विकेटें शेष हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, तो विकेटें जल्दी जल्दी निकालनी पड़ेंगी और हम देखते हैं कि किस प्रकार से गेंदबाजी करके खामोश रखने की कोशिश की है न्यूजीलैंड के बैटर्स को। इस तरीके से आधारित रहती है थोड़ा सा आक्रामक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया जाए के नेतृत्व में। और यहां पर जिसके बाद के केएल राहुल ने इस मरतबा कोई गलती नहीं की, बहुत ही आसान सा कैच। और जसप्रीत बुमराह जो कि लगातार प्रभावित हुआ, लेकिन अभी बचे हुए समय में काफी कुछ हमको एक्शन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर आप स्थान सुनिश्चित करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी इनामी राशि आप टीम स्लिप किसी भी मौके के लिए तैयार आते ही पैदा की थी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहली पारी में खराब प्रदर्शन किया तो आपके पास मौके नहीं है वापसी करने के। जिंदगी की यही तो बढ़त मिल जाती है पहली पारी के आधार पर। हालांकि रन उनके सिर्फ 204 का उपयोग जरूर किया, पुल किया। अश्विन भी पीछे नहीं है। ऑन द राइज खेलने की कोशिश में बॉल हवा में जरूर रही। एक बार ऐसा लगा कि शायद फील्डर के हाथों तक पहुंच जाएगी। बेंगलुरु क्रिकेट का प्रमुख केंद्र, मोस्ट विकेट यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अश्विन को बुमराह ने 38 ने विकेट्स लिए थे। फिलहाल बॉल पैड लाइन पर पिच हुई थी, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। अच्छी नहीं का अंपायर्स की बात हुई है, पहले ये देख लेते हैं गेंद 4 रन के लिए जा रही है। आसानी के साथ दिशा दे दी थी। अंपायर सब सेलेक्टर भी बन रहे हैं। मनोज भाई आप खुद अंपायर हैं, आपको क्या लगता है? ये स्थापित अंपायर रहे थे, बढ़िया गेंदबाजी। ये लाइन अच्छी है फ्लिप्स के विरुद्ध। अलिंदार के बारे में टीम प्रबंधन के साथ भी जुड़ सकते हैं। यहां पर खेलने की कोशिश, चूके फ्लिप्स रुकते नहीं है और इसी से ओवर्स का खेल 35 रन और 2 सफलताएं भारतीय टीम के खाते में। अच्छी गेंदबाजी आज सुबह में भारत की तरफ से हुई है। लबो लबाब यही है और अभी हमने भारत के बॉलिंग कोच को स्क्रीन पर देखा, वो संतुष्ट है काफी। तो आकाशदीप का भी नाम है तो निश्चित रूप से बढ़िया अच्छी शुरुआत जडेजा। जब जडेजा ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे कॉनवे के विरुद्ध, अच्छी शुरुआत की है आज दिन के अपने स्पेल की पहले ही। आसान नहीं होगा आज भारतीय स्पिनर, मुश्किलें पैदा करता है सामने।
एक कसा हुआ ओवर समाप्त हुआ। रविंद्र जडेजा का मेडन ओवर था। हालांकि बांग्लादेश के विरुद्ध उन्हें विश्राम दी स्पिनर्स को खेलना। सत्र की अगर बात करें ये टॉम लैथम के रूप में आती बॉलर्स थे। बढ़िया बॉल, जोरदार अपील, फर्स्ट इंटरसेप्शन। इशारा भी किया सरफराज खान ने कि जो बॉल है पहले पैड पर लगी है। बातचीत चल रही है रोहित शर्मा, जुरेल और सरफराज खान के बीच में, तो निश्चित रूप से पवेलियन की राह पकड़नी पड़ती है। काफी 170 रन की जो बढ़त है इस विकेट पर, वो काफी महत्वपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि वर्किंग डे है। और ये उठा के मारा है जिसके लिए फ्लिप्स जाने जाते हैं और गेंद को भेज दिया है सीधे मैक्सिमम के लिए। और इसकी उम्मीद, बढ़िया लाइन। और उनकी एक विशेषता यह भी है कि काफी जल्दी जल्दी ओवर पूरा करते हैं। और खेलना बहुत जरूरी है। और यहां पर फिलहाल फिलिप्स गए हैं तो विकेटों का पतन शुरू हो चुका है बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। लगातार नियमित पॉलिटिकल। तो कुल मिलाकर के भारतीय बॉलर्स ने आज बढ़िया काम किया है। 3 सफलताएं अर्जित की। में बदलते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पर चले गए, लॉक हो गए थे, जिस वजह से गेंद और बैट के बीच में संपर्क स्थापित नहीं कर पाए। He's hardly made any mistake, has he? He's looked Vindra do. To counter that, he will take the singles, which is good. We're only 6 down. It's interesting to see that his first instinct is to go on the back. But it's up to Rachin. Rachin seems to love Bengal. On the charge, Matt Henry. He doesn't time it, but he'll get a bound. This time in front of point, and that'll run away for back-to-back boundaries. Two terrifically important shots there for Bolden this time. Well, that's the way Matt Henry plays. Quite often it comes off on other occasions. At the other end to bat with. He's side towards the bowler, and if it doesn't pitch clearly, for Saudi, they know where he will. His hands are almost in perfect positions. Single off the first ball. Jadeja will not mind that at all. Emulate well. Once again, brilliant keeping. Lovely. Ravindra will try to get back for 2. He won't. That's extremely well done from Rohit Sharma, who made good pace there. Now Southey can't resist the urge. Little fumble and they'll come back for 2. Again, that one does bite away. No timing at all, but he's going to get away with it. Looking to go down the ground, and I think Jadeja saw him coming, which made it very hard. The role to play here is to just hang in there. Nothing fancy, 243% this test, apart from Tom Latham. This time he hits it a little inside part of the bat, and he gets 4 for that as well. It wasn't perfectly timed, but yeah, they definitely have come with the cuts. And some will play like Tim Southey, and sometimes you can't do much about it. Another boundary. Big over for New.
Bowling from the edge by. Now he gets one to turn. Gets one to turn past the left-handers outside. आज भारत ने अच्छी गेंदबाजी की अभी तक से पहले सत्र की अगर बात करें टीम सऊदी और न्यूजीलैंड के स्कोर को और उनकी न्यूजीलैंड की बढ़त को और आगे बढ़ा, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर इनकी गति और दिशा में तब्दीली करते हैं। जडेजा इस बीच में कट किया थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और कल जब रचित खेले तो आप राहत की सांस नहीं ले सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि वो स्वयं आउट हो जाएगा। एक और करारा शॉट ऑफ साइड में 4 रन कवर क्षेत्र में, पहले कट किया था और इस बार ड्राइव किया, दिखाया। भारत के चाहे स्पिनर्स या तेज गेंद के पास सुनहरा मौका रहता है बड़ी पारी खेलने का और काफी हद तक बहुत ही अच्छे तरीके से साथ निभाया है टीम सऊदी का। टीम सऊदी का काल फिर से भारत के लिए रन्स काफी आसानी के साथ न्यूजीलैंड की तरफ से बनते हुए एक और चौका किए भारत ने, जो कि 250 रनों की हो गई है। उनका खैमा बिल्कुल खुश संतुष्ट, और ये उसी का परिणाम है कि आत्मविश्वास से भरपूर ये शॉट बढ़त को 256 रनों तक पहुंचा दिया है। अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। ये एक और खूबसूरत और करारा शॉट रचिन रविंद्र के बल्ले से निकलता हुआ, और ये गया है 6 रनों के लिए। और अब न्यूजीलैंड की ये मंशा है कि तेजी के साथ रन बनाए। एक और चौके के लिए गेंद जाती हुई, बढ़त तो पहले ही मजबूत हो। 4 विकेट जरूर भारत ने लिए हैं, लेकिन 134 रन खर्च भी किए। 4.65 में खिलाड़ी को तैनात किया है, स्वीप किया, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, 4 रन मिलेंगे और इसी के साथ एक शानदार शतक पूरा किया रचित रविंद्र ने। कदमों का इस्तेमाल फिर से किया। इस मर्तबा टीम सऊदी ने एक मर्तबा फिर से गेंद को भेजा अधिकतम के लिए। पूरी जहां चाह वहां राह, आसानी के साथ जहां चाह रहे हैं वहां रन बना रहे हैं टीम सऊदी। Just to put in perspective, Smith's talking at one stage about how there was a time when you scored 100 runs in a session, you made 300 in the day. That is very good. These two have gone on and made 106.